करो इसका, what will be the answer? What is the time taken by the block to come to rest with respect to cart? So with respect to cart, what is the time taken by the block to come to rest? Guys, please check before messaging, okay? Because I have seen few of you have messaged on co-host account that I won't be able to read. What is the answer बच्चा लोग? Infinite. ये कभी रुकेगा नहीं, क्यों? Because no, देखो, time taken by the block to come to rest with respect to cart. Cart के respect में what will the velocity of when this particular block will come to rest? एक तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे, वहां से समझ में आएगा आपको. यू विल गेट टी जो मिलेगा बच्चा लोग, वो आपको मिलेगा डी डिवाइडेड बाई वी टू द पावर एन, ऐसा करके. तो व्हेन सॉरी हाँ टाइम टेकन विल बी दैट. तो सॉरी यहाँ तो मिलेगा आपको v मिलेगा या t जो मिलेगा, t मिलेगा समथिंग d डिवाइडेड बाय समथिंग v टू द पावर n और v टू द माइनस n, ऐसा करके. सो व्हेन दिस विल बी लाइक व्हेन दिस वेलोसिटी विल बी 0, तो उसको जब कन्वर्ट करोगे तो t का पावर कुछ ऐसे आ जाएगा n के फॉर्म में, e टू द पावर और t टू द पावर n के फॉर्म में. सो व्हेन टाइम विल बी इंफिनिटी, देन ओनली the velocity of this cart will be, velocity of the block will be 0. ठीक है? How many of you have attempted these questions बच्चा लोग? कितने लोगों ने attempt किया? Because I'm not going to solve them unless you have attempted them. अगर आप लोगों ने attempt किया है तो बताओ मुझे. How many of you have attempted these questions? सिर्फ एक दो लोगों ने. So those who have attempted, just ping me after the class. मैं तुम्हें solution भेजूंगा, दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक है? Otherwise it is like highly illogical बच्चा. If you are not attempting these questions at your home ना, तो थोड़ा मुझे पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा इन सारे क्वेश्चंस को. Anyway, conceptual part everything I'll teach, but unless you attempt those questions, तो आपका approach भी नहीं बनेगा, and that will be kind of spoon feeding, and that won't help you at all. ठीक है? चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. Yes, Vishwa, correct. A body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3. ये break वाला spelling गलत है. It is what? BREAKS. Breaks into 3 fragments of mass in the ratio 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with speed 15 meters per second each. The speed of heavier fragment is. बोलो बच्चा लोग कौन सा फॉर्म यूज होगा? Which concept will be used here? Which concept will be used here? Which concept will be used here बच्चा लोग जल्दी से बता दो. Conservation of momentum, right? क्या होगा बच्चा? Conservation of momentum. तो initially the body was at rest. Mass कितना था बच्चा? 1 kg. And it has been broken into 3 pieces. One जिसका mass का ratio क्या बच्चा? 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with speed 15 meters per second each. मतलब ये मान लो ऐसा कोई एक ब्लॉक है बच्चा. Now this is going to break into 3 pieces. 1, this is 2, and let's say this is the third one. ठीक है? 2 of them are moving perpendicular to each other. Let's say this is going in this direction, this is going in this direction. Where should the third one move बच्चा? सबसे पहले ये बताओ आप. The 2 pieces of equal mass, this is what? MM ratio, right? So this will be what? M, this will be M. ये कुछ और ratio होगा. Total mass 1 था बच्चा. Tell me first of all, what will be the ratio? If this is 1 kg, what will be the masses of all those 3 particles? पहले तो ये बता दो. M1 plus M2 plus M3 is equal to 1 kg. First thing. Second क्या है बच्चा लोग? M1 is to M2 is to M3 is 1:1:3. So tell me guys, what is the value of M1, M2 and M3?
What is the value of m1, m2 and m3? (200, 200, 600). Very good बच्चा, keep it up. तो m1 is equal to m2 is equal to 200 gram and m3 will be equal to 600 gram, है ना? So total will be 400 plus 600, that is what बच्चा लोग? 1000 gram, that is 1 kg, correct? And then ratio 200 is to 200 is what? 1 is to 1 is to 6, 600 is to 3. तो ratio correct है, मतलब यही correct answer है, ठीक है? So now once we'll get this ratio बच्चा लोग, इसके बाद हम बात कर सकते हैं. Now I know the value of m and m, ठीक है ना? This is 200 gram, this is 200 gram. Speed क्या है बच्चा लोग? What is the speed? This is 15 meter per second and this is also 15 meter per second. Tell me guys, in which direction the third one, of mass 600 gram must move? बोलो बच्चा लोग, in which direction this 600 gram must move? साउथ नहीं बच्चा, नॉर्थ साउथ तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, साउथ वेस्ट की तरफ. ओके ठीक है, कह सकते हो. सी बच्चा लोग ध्यान से सुनो. If net momentum is conserved, if total momentum is conserved, what was the initial momentum बच्चा लोग? This was 1 kg block, है ना? And what is the velocity of this? 0. So initially what was the momentum? 0. So even after explosion, what should be the momentum of system? It should be 0. So two of them are moving in this direction. So their momentum will be somewhere here, बीच में कहीं, because this will have m into v momentum, this will have m into v momentum. Resultant of these two will be along this direction. So resultant of these two momentum is in this direction. In which direction third momentum should be placed so that resultant momentum is 0? I will say, sir, the magnitude of that should be equal and it should be in opposite direction. ऐसा ही होना चाहिए, तो इससे डायरेक्शन भी मिल जाएगा. But since in this question I don't have to find the direction, I simply have to find the speed. हमें क्या करना है बच्चा? हमें सिर्फ स्पीड निकालना है. तो हम क्या करेंगे? आप इसका नेट आप बोल सकते हो, तो मैं लिखना उधर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आई एम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. I will write momentum of the heavier particle, momentum of the heavier particle must be equal and opposite to the resultant of other two momenta. करेक्ट है बच्चा? तो रिजल्टेंट का इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यू में आंसर आना चाहिए. Then if that is the case, I would write resultant of other two momenta will be. क्या होगा आंसर बच्चा लोग? तो मोमेंटम ऑफ वन ऑफ देम क्या हुआ? मास इनटू वेलोसिटी. Both of them are having same momentum, 200 gram, 0.2 into 50, 0.2 into 15, है ना? And they are in perpendicular direction. So what will be their resultant बच्चा लोग? तो एक लिख देंगे हम 0.2 into 15 का स्क्वायर प्लस 0.2 into 15 का स्क्वायर. So answer will be √2 into 0.2 into 15 क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 3, right? 0.2 into 15 is what? 3. करेक्ट है? सबको समझ में आ रही बात? तो 3√2 मिला मुझे रिजल्टेंट kg meter per second. So momentum of the heavier particle must be equal to 3√2 kg meter per second. What about the speed then? We know that mass of the
particle is 600 grams, so 0.6 into speed is unknown. This is the momentum of the heavier particle in terms of mass into velocity, and this must be equal to 3 root 2. If we get the value of v, I'll get 3 root 2 divided by 6 into 10. तो यहां से क्या मिलेगा बच्चा लोग? 5 root 2 meter per second. Correct है विनीत? So what is the answer for this question बच्चा लोग? तो answer for this question is option A. Guys, click yes if you have understood this. बच्चा लोग प्लीज क्लिक yes if you have understood this solution for this question. बात समझ में आई सबको? हमने क्या किया बच्चा? मोमेंटम को कंजर्व किया. क्या ये कोलिजन से रिलेटेड है? नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू कोलिजन. दिस रिलेशन इज रिलेटेड टू सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है बच्चा लोग? चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चा लोग टेल मी द टॉपिक फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन. कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है? Just read this question. देखो, जब whenever you see some kind of collision, that doesn't mean you have to utilize, you have to use the collision formula only. बात समझ में आ रही है? Yes, it is a kinematics problem. However, it is given if collision is perfectly inelastic, सिर्फ इसका एक ही मीनिंग आएगा. We are going to use the fact, this fact only, that after collision both of them are going to move together. सिर्फ this is going to be used here. Otherwise, otherwise all the concepts of kinematics will be used here. Once they will collide, सिर्फ यही concept एक खाली यूज होगा कि after collision they are going to move together. वहां से एक velocity मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा kinematics लगेगा इसमें. ठीक है, तो इसको प्लीज अटेम्प्ट करिएगा और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. दिस क्वेश्चन आई हैव इंक्लूडेड जस्ट टू मेक श्योर you understand how to like which concept has to be used. ये आपको समझ में आना चाहिए. ऐसा मत सोचो कि कोलिजन का प्रॉब्लम है सर, इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व करें, नन ऑफ द वेलोसिटी, वन ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन हियर. तो सिंपल सी बात है यार, वो भी लगेगा और साथ में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विल बी फ्रॉम काइनेमैटिक्स. ठीक है बच्चा लोग, चलिए इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा. आई हैव गिवन यू लास्ट क्लास ओनली. Now guys, we'll talk about oblique collision. However, this is not very important to you. But since we know collision, since we know Newton's second law, मैं बताता हूँ करना क्या है आपको oblique collision में. Okay? So second, जो the topic which we are going to study is oblique collision. What is the meaning of oblique collision, बच्चा लोग? Any idea? What is the meaning of oblique collision, बच्चा लोग? जल्दी से बता दो. कोई आइडिया है आपको? मतलब क्या है? देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन. ऑब्लिक कोलिजन का मतलब देखो ये है कि इफ देयर इज अ बॉल लाइक दिस, ओके, कंसीडर दिस इज अ बॉल, ओके, एंड देयर इज वन मोर बॉल located here. Now they are not actually moving in this direction. This is moving in this direction, this is moving in this direction, and this might be moving in upper wala direction, or this might be a thrust. So imagine when this ball is going to move in this direction, how this is going to collide. बच्चा लोग देखो, यहां ऐसे collide करेगा, है ना. This is how the collision is going to occur. Velocity is in this direction, velocity is in this direction, but the line of impact कहां है बच्चा लोग? तो normal का जो direction होता है वही line of impact होता है. So this is the line of impact, correct, because it cannot penetrate this, but velocity किधर है? इधर है. So direction of velocities of the object is different, is other than the direction of line of impact. Okay, तो इधर लिख सकते हो आप, direction of velocities are not along
line of impact. Now to solve this type of question, ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो डिफरेंट बुक्स फॉलोज डिफरेंट अप्रोच. मैं आपको सिंपल सा एक अप्रोच बताता हूं. टेल मी गाइज, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज आप आंसर करो. व्हाट कॉजेज चेंज इन मोमेंटम? फॉर मोमेंटम टू बी चेंज्ड चाहिए क्या हमें? बोलो बच्चा लोग. What do we need to change momentum of an object? Come on guys, please answer this. Vineet is saying a change in velocity. How velocity will be changed, bachcha log? That is correct. If you want to change momentum, you need to change the mass or you need to change the velocity. But we are considering systems having constant mass, so velocities has to be changed, right? Acha. How velocity can be changed? With acceleration, right? How velocity can be changed, bacha? So with acceleration. How acceleration can be generated? How acceleration can be produced? By using a force. In which direction momentum can be changed? Bolo bacha log. In which direction momentum will be changed? In the direction of applied force. So the momentum will be changed in the direction in which the force has been applied. है ना? So momentum will be changed along the direction of application of force. Guys, when two bodies will collide, tell me in which direction they will apply force on each other. Because when they are not colliding, they are not applying any force on each other. कोई net force नहीं. But when they will collide, tell me in which direction they will apply force on each other. बोलो बच्चा लोग. Just imagine this only ना. ये जब कोलाइड करेगा बच्चा, when this sphere is going to collide with this, tell me in which direction these two spheres are going to apply force on each other. कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? जल्दी से बताओ बच्चा लोग. अरे सिंपल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था ना, कॉन्टैक्ट फोर्स. बिकॉज दिस फोर्स विल कम बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट and because of the restriction of motion, है ना? This is at rest, this is trying to go in this direction, so this is going to resist the motion in perpendicular direction. Correct है बच्चा लोग? तो they are going to apply force on each other along the direction normal to the surface in contact. तो ये surface contact में है and this is the normal, so they are going to apply force in normal direction, right? Now, if force is in rightward normal direction, tell me in which direction momentum will be changed or velocity will be changed. बोलो बच्चा लोग. If forces are acting in normal direction, tell me in which direction velocity of the object will be changed. I will say in the same direction, sir, in normal direction only, right? So if this body is going to apply force in this direction, so velocity of this object is going to change in this direction. This sphere is going to apply a force on the smaller sphere in this direction. So the speed of this object or velocity of this object is going to change in this direction only, right? Acha. What if I ask you to find change in velocity? What if I ask you to find change in velocity along tangential direction? बोलो बच्चा लोग. What if I ask you to find change in velocity along tangential direction? Come on guys, give the answer. What will be the change in velocity of the individual objects along the tangential direction? बहुत सन्नाटा है यार क्लास में, मजा नहीं आ रहा, जल्दी आंसर करो. Guys, am I audible to all of you? देखिए यार, अगर तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई में मजा नहीं आ रहा ना, छोड़ दो यार, मतलब लीव द मीटिंग, इट्स ओके. बट आई डोंट वांट टू बी, मतलब फालतू सा एक ही चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगा यार. इफ यू, आई एम टेलिंग वेरी वेरी सिली, अगर तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, जस्ट लीव द मीटिंग यार.
Anyway, your college are going to reopen in few days, right? Because ये बिल्कुल भोंदू सा बैच लग रहा है मुझे यार. I don't know what is the problem, exact problem. Because there might be a problem with my teaching, I don't know. Or there might be a problem with yourself that you are not practicing, you're not answering, you're not taking interest and all. I won't count myself that bad because I'm the teacher who is teaching other batches also, and they are quite comfortable. I'm taking the second batch as well. I'm taking PU2 batch as well. I'm not that bad according to me. I don't know what is your opinion on this, but I'm not that bad. So but there could not be a problem from my side. Ki, okay, I'm not teaching you properly because I'm going very, very basic and very, very slow. Still, if you're not responding, it is very, very disheartening and very, very saddening for me. Like it actually brings my confidence to underground level. That why am I even teaching this? I now offline classes are going on. I have some other options also to take the class. Number of students is also not very, very high here. So many of you will suffer. Very basic questions I'm asking you. I'm asking you simple, yaar. If force is acting in this direction, I'm asking you what will the change in velocity in tangential direction? Only Vishwa has answered. बाकी लोग क्या मूर्ति हो? कुछ तो आंसर करोगे ना यार. सर नहीं आएगा, मुझे नहीं पता सर. Zero sir, non-zero sir. कुछ तो होगा ना. And first of all, if I ask you what will be the change in velocity, there can be only two answers, either zero or non-zero, because I have not given you the values. Still you are not responding. I don't know what should I do then. Let me see if you have responded on co-host. No, only one of you have responded on co-host also. तो बाकी सब बिल्कुल zero ही हो क्या? If this is an object, and force on this object is in this direction, tell me what will be the change in velocity in this direction? Are you sure about it? Zero hoga. Why zero hoga? Because there is no any component of force along this direction. So there is no any component of velocity in this direction. Sorry, component of acceleration in this direction. So acceleration in this direction is zero. So velocity will remain constant. So the same thing I have asked you now. When collision will occur, यहाँ देखो collision होगा तो when collision will occur, in which direction particles, these objects are going to apply forces on each other? So when collision will occur, the objects are going to apply force along the normal. So moment of the objects, moment of individual objects will change in the direction or will change along the direction of application of force. तो अगर आप देखो बच्चा, ये अगर मैं ऑब्जेक्ट करूं तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा ऐसा, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, इसको मैं इधर लाता हूं, force on this object will act in this direction. ये क्यों मूव क्यों नहीं हो रहा है? Yes. So this is going to move. This is going to apply in this direction. So can I say velocities will change on this in this direction only? Because force किधर लग रहा है? इधर ही लग रहा है ना. Normal reaction here, normal reaction here. Let me write it. During collision, objects are going to apply force on each other along normal direction. Hence, velocities of the objects will change in normal direction
ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हुआ. What will happen to change in velocity along tangential direction? Change in velocity along tangential direction. What will be the answer? I will say, sir, forces are acting in normal direction. There will not be any force that is acting along the tangent. There is no any force acting along the tangent. So there won't be any change in velocity of these particles along the tangent. ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो no change of velocity of objects along tangent will occur since no force is present in that direction. तो बच्चा whenever oblique collision will be given to you, आपको करना क्या है? You have to do the same thing as you have done earlier. क्या करते थे बच्चा? मोमेंटम कंजर्व करते थे, राइट? सो फॉर ऑब्लिक कोलिजन आपको करना क्या है, मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप. फॉर ऑब्लिक कोलिजन फर्स्ट क्या करना है बच्चा? यू हैव टू इक्वेट द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल अलोंग टेंजेंट. तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या था पहले पार्टिकल का? u1, राइट? तो मैं क्या बोलता हूं, u1t will be equal to v1t. What is the meaning of u1t and v1t? Velocity of the particle along tangent, or you can say initial velocity of the particle along tangent will be equal to final velocity of the particle along tangent. Similarly, for the second object, initial velocity of the particle along tangent will be equal to final velocity of the particle along tangent. अच्छा, what about the perpendicular component, normal component बच्चा लोग? तो I will write m1 into u1 along normal, समझ में आ रही है, प्लस m2 into u2 along normal will be equal to m1 into v1 along normal plus m2 into v2 along normal. तो I am conserving the momentum along the normal direction. I am conserving, this is what the conservation of momentum of the system. ये क्या है बच्चा लोग? This is the conservation of momentum of the system, full system, along normal direction. Why बच्चा लोग? Because for a system, if we talk about both of them as a system, in normal direction, net force is what? Zero. Normal cancel हो रहा है तो zero. So momentum, initial momentum along normal direction, final momentum along normal direction of the system, they must be same. अच्छा, what is this बच्चा? This is conservation of momentum of individual particles. ये क्या है बच्चा लोग? Conservation of momentum of individual object, individual particles लिख सकते हो along tangent, because along tangent none of the particle experiences any force. So along tangent their momentum will be conserved. तो mass भी same change नहीं हो रहा है. Momentum होता है mass into velocity. If mass remains constant, so velocity has to be constant. That is why along tangent their velocities are not changing at all. But along normal directions, individual velocities can change, because individually they are experiencing forces. Individually they are experiencing forces. But as a system, they are not experiencing any net force. That is why along the normal, the conservation of momentum will be valid, but for the system, not for the individual particles. Okay? ये तो दो इक्वेशन. तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चा लोग? Third equation is coefficient of restitution. But guys, tell me what will be the formula for coefficient of restitution? When we talk about separation, velocity of separation, velocity of approach, तो किसके डायरेक्शन में होता है? कौन से डायरेक्शन में होता है? That is along the line of impact. सेपरेट कैसे करते हैं? ये दूर ऐसा जाता है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे?
तो here I will redefine coefficient of restitution as velocity of separation along normal. ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? नॉर्मल है. along normal. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चा तो और ज्यादा क्लियर होगा. डिवाइडेड बाय velocity of approach along normal. So these are the three equations that you need to use for oblique collision. Guys, click yes if you have understood this slide. बच्चा लोग प्लीज क्लिक yes if you have understood this slide. क्या क्या करना है आपको समझ में आया? तो break the velocity into two components, one along the normal and other one along the tangent. What is the meaning of normal? तो normal is the direction perpendicular to the surface in contact. तो जो भी surface टकराएगा ना उसके perpendicular direction को हम क्या बोलेंगे? normal बोलेंगे. And the direction parallel to the surface in contact will be the tangential direction. So these are the three equations that we need to use here. तो चलो कुछ solve करते हैं क्वेश्चन. चलो बच्चों लोग इसका आंसर करो, एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है, using the same approach that we have studied here. Okay. A ball of mass m hits a floor with a speed v0. A ball of mass m hits the floor with a speed v0, making an angle of incidence alpha with the normal. The coefficient of restitution is E. Find speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball as well. बताओ बच्चा, क्या ये हेड ऑन कोलिजन है? नहीं. अगर ये ऐसा होता, देखो बच्चा, अगर कुछ ऐसा एक वॉल होता और एक बॉल ऐसे इसको हिट कर रहा है, then this would have been a head on collision. बट अभी बॉल कैसा हिट कर रहा है बच्चा लोग? बॉल इज गोइंग टू हिट लाइक दिस. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है इसको. डायग्राम बना लो बच्चा. अगर डायग्राम बना लिया ना तो आधा काम हो जाएगा. कुछ इस तरीके से ऑब्लिकली कोलाइड कर रहा है विद द नॉर्मल. तो ये कुछ नॉर्मल ऐसे दिखा दो बच्चा लोग, इधर ऐसे ही नॉर्मल हो गया. एंड दिस एंगल इज अल्फा. स्पीड इसका v0 है, मास इसका m है. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये सारी चीजें क्लियर कर. चलो बच्चा लोग जल्दी से अटेम्प्ट करो. चलो फॉर योर हिंट एक और मैं हिंट देता हूं, ठीक है? वो क्या है? अगला डायग्राम. तो मान लो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना. आफ्टर कोलिजन लेट्स से बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और ये इसका लाइन हुआ एंड दिस एंगल इज लेट से बीटा. मुझे नहीं पता कितना है, मान लो मैंने बोला बीटा. एंड दिस वेलोसिटी इज लेट से. अब तो तुम्हें पता है क्या करना है. नॉर्मल डायरेक्शन निकालो, टेंजेंशियल डायरेक्शन निकालो एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करो, काम हो जाएगा. Any answers? Guys, let me know if you are struggling with this. ठीक है ना? जब आपको लगे कि सर मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अब आप प्लीज कर दो. Then I'll do that. Okay? Guys, did you understand the question and the diagram? Click yes. Did you understand the question and the diagram? बच्चा लोग समझ आया ना? तो चलो मैं सॉल्व करता हूं बिकॉज बहुत सारा टाइम ले रहा हो तुम लोग. नो प्रॉब्लम. यश देखो बच्चा क्या करना है. तो फर्स्ट केस क्या है? अच्छा बताओ नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? तो सरफेस इन कांटेक्ट. तो ये एक सरफेस तो मेरे को मालूम, दूसरा सरफेस ऐसे है ना? तो दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन. कौन सा नॉर्मल डायरेक्शन बच्चा? दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन. व्हिच इज द टैंजेंट बच्चा लोग?
तो दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। सो कैन आई से द टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉर वेलोसिटी vt will be equal to v naught t, है ना, बिकॉज इन टेंजेंट नो फोर्स इज एक्टिंग। तो क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी का एक टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, कुछ ये वाला, राइट, दिस विल बी vt एंड इसका होगा ये v naught t, राइट, दे मस्ट बी सेम। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। व्हाट अबाउट द नॉर्मल कंपोनेंट बच्चा लोग, तो नॉर्मल कंपोनेंट ये मिला, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट कुछ ऐसा रहेगा, राइट, ओके। तो एक तो है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे बच्चा, देखो आई कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आल्सो, बट यहां बीटा इज अननोन टू अस। बीटा इज व्हाट बच्चा लोग, अननोन टू अस, है ना, तो और v इज आल्सो अननोन टू अस। तो आई विल से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल कम टू रेस्क्यू। व्हाई, आई विल टेल यू वेरी 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 सिंपल। देखो तो ये फॉर्म कैसे निकालूंगा मैं, फॉर दैट आई विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में देखो बच्चा क्या है, दीज आर द टू पार्टिकल्स, एक वॉल है एक बॉल है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है बच्चा, देखो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस इज एट रेस्ट। तो वन ऑफ द डायरेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, पॉजिटिव, अदर वन विल बी नेगेटिव। तो बताओ राइट को पॉजिटिव मानो या लेफ्ट को पॉजिटिव मानो, यू टेल मी which direction should I consider positive or negative? Positive। तो पहले ये बताओ राइट को पॉजिटिव मानो या लेफ्ट को पॉजिटिव मानो, राइट पॉजिटिव ले लूं, चलो ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग राइटवर्ड एज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बच्चे, देखो दिस इज सेपरेटिंग फ्रॉम द वॉल बट वॉल इज एट रेस्ट, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द वॉल इज व्हाट, जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा, vn माइनस जीरो, तो माइनस वी एन लिखूंगा, क्यों, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो माइनस वी एन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बच्चा लोग, तो विच इज अप्रोचिंग, वी नॉट एन इज अप्रोचिंग। कौन अप्रोच कर रहा है बच्चा लोग, वी नॉट एन अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो राइट लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ द वॉल दैट इज जीरो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चा लोग, समझ में आई बात। अच्छा ये माइनस क्या बता रहे हैं बच्चा लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन, ये माइनस क्या बताएगा बच्चा लोग, बताओ जल्दी से। और शुड आई गेट दिस वीएन पार्ट जीरो, ये वीएन नेगेटिव, तो आंसर इज नो, बिकॉज हमने फॉर्मूला क्या गलत लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, तो फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1, याद करो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, दिस इज अलोंग द नॉर्मल। तो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, इसको मैंने अगर मान लो 2 माना एंड दिस इज 1, तो v2 में अगर वॉल की बात करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, माइनस ऑफ v1 क्या हो जाएगा बच्चा, तो माइनस vn। नीचे में क्या बच्चा, u1 माइनस u2 अलोंग नॉर्मल, तो u1 क्या है, v नॉट n, माइनस u2 क्या है, जीरो। तो अभी देखो नेगेटिव का भी कहानी खत्म। तो मुझे आंसर क्या मिला बच्चा लोग, e का वैल्यू vn डिवाइडेड बाय v नॉट n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vn बच्चा लोग, e into v नॉट n। डू आई नो द वैल्यू ऑफ v नॉट n बच्चा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट n, बोलो बच्चा लोग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट n। देखो भाई ये अगर अल्फा है, if this is alpha, angle made by this horizontal and this is alpha, so this angle is also alpha, isn't it बच्चा लोग। if this angle is alpha, तो parallel line देखो है ना, ये these are parallel line, तो alternate angles ये भी क्या हो जाएगा, alpha। this is v naught, so this v naught n will be क्या हो जाएगा बच्चा लोग, e into v naught cos of alpha। क्लियर है, what is v naught t guys, what is v naught t, so if this is alpha, this is 90 minus alpha, so v naught t will be equal to v naught sin alpha। guys can I write velocity v is nothing but square root of vt square plus vn square। बच्चा लोग समझ में आ रही बात, अगर मैंने ये लिखा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, v naught into square root of, आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
So this is the speed of the ball after collision. Guys, click yes if you have understood this solution. बच्चा लोग click yes if you have understood this solution. अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी ऑनेस्टली फ्रैंकली, अब जो भी डाउट है वो पूछ लो, अदरवाइज क्लिक यस. विनीत ने कहा ओह मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लगाने के बारे में सोचा ही नहीं था. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते तो बच्चा वी भी अननोन था, बीटा भी अननोन था, मुश्किल आ जाता ना, है ना? समझ में आ रही बात? और वहां पे फिर एक और चीज आता मुश्किल, तो इसके लिए हमने क्या किया कि सीधा इसको यूज किया. अच्छा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन बच्चा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछा है. व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल बीटा. हाउ विल यू फाइंड द एंगल बीटा बच्चा? तो यहां पे डायग्राम बना लो, देखो मजा आ जाएगा. ये हो गया बच्चा लोग वेलोसिटी, ये क्या हो गया बच्चा लोग? वेलोसिटी. दिस इज क्या बच्चा लोग? वी एन. दिस इज व्हाट? वी एन. एंड दिस इज व्हाट? वी टी. ये क्या है? वी टी. एंड दिस एंगल इज नथिंग बट बीटा. तो व्हाट विल बी tan बीटा? It will be Vt divided by Vn. What is the value of Vt बच्चा लोग? तो वैल्यू पुट करेंगे. Vt is what? V naught sin alpha. What is Vn? E V naught cos alpha. तो देखो V naught cancel. Sin alpha by cos alpha is what? Tan alpha divided by E. तो आंसर क्या मिलेगा? Tan alpha divided by E is the value of tan beta. So what is the angle of reflection? तो angle of reflection is tan inverse of tan alpha by E. Bacha, please click yes if you have understood this solution for this question, the full solution. Guys, click yes if you have understood the full solution for this question. देखो जब भी कभी अगर ऑब्लिक कोलिजन से क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ ऐसा ही आएगा, आसान वाला, ठीक है ना? और भी कुछ कराऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चलो बच्चे इसका आंसर कर दो. आंसर नहीं, यू हैव टू शो इट एक्चुअली. तो ये एज ए कोरोलरी, एज ए प्रॉपर्टी याद करना आप. A ball of mass m makes an elastic collision with another identical ball at rest. Show that if collision is oblique, the bodies go at right angles to each other after collision. तो एक बॉल अगर आके हिट करे ऑब्लिकली दूसरे बॉल को, and if the collision is elastic, show this that both the balls will move in perpendicular direction to each other. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है and very very easy. Once you remember the fact that along tangent velocity won't change, ठीक है? Along tangent velocity won't change, and two identical masses, if they are going to collide elastically, their velocities exchanges with each other. So if you remember these 2 points, you can aram se prove it. So guys, take your time and please attempt it, and then let me know in the chat box once you prove it. Come on bachcha log, please attempt it. Let me know if you have attempted it, you didn't get the answer, okay? वो भी आप मुझे बता दो so that I should know कि हाँ आपसे नहीं हुआ है. Otherwise I'll be giving you extra 1 or 2 minutes and you guys will be just wasting your time. करो विनीत, करो. Vineet is attempting. Very good. Very good Tanvi, very good. ठीक है यश, वेटिंग.
Vikas, PU college students, you have a meeting at 7:30 tonight. You know that, right? आपको मैसेज गया होगा ग्रुप में. Pradeep must have sent that message on the group, है ना? So you have a parent-teacher meeting, parent-students-teacher meeting at 7:30 p.m. today. Please don't miss that meeting and please attend that meeting. तो विकास PU college के जो बच्चे हैं वो उनको attend करना. There'll be some you can say notice or some discussion will happen in that. Yes, Varnika, about that only that meeting has been conducted. Agendas are like college reopening dates, consent, how many of you want it to be opened, what are the safety precautions that has to be followed, और बहुत सारी चीजें. ठीक है, about the academics and other parts. नहीं चमक रहा है, मैं चमकाता हूँ विश्व, डोंट वरी. चलो बच्चे, इसका मैं आंसर करता हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से. तो ये मान लो ऐसा कोई एक बॉल है बच्चा लोग. ठीक है, ये कोई बॉल है और ये दूसरा बॉल है. आइडेंटिकल है ना, तो सेम ही को कॉपी कर लेता हूं ना. इसको कॉपी करते हैं. ये कुछ हो ऑब्लिकली क्या कर रहा है बच्चा लोग, कोलाइड कर रहा है, राइट. तो मानो ये इन दोनों का नॉर्मल डायरेक्शन है. आई एम कनेक्टिंग द सेंटर्स. ओके, आई एम कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ देम. सो दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन. ये इनका नॉर्मल डायरेक्शन. अरे यार बार बार ऐसे क्यों ड्रॉ हो रहा है. Now, if this ball is moving in this direction, and even it is at rest, even if it is at rest, if it is moving in this direction, this would have been a head-on collision, right? ये होता क्या बच्चा, head-on collision. But अभी क्या है, ये मान लो ऐसा move कर रहा है, this, and this angle is, let us say, some angle alpha. Tell me, guys, is this an oblique collision? क्या ये oblique collision है? Answer is yes. The line of impact is this one, velocity is along different direction. So this is what an oblique collision, no problem. तो बोलो बच्चा लोग, ये मान लो अगर मैंने बोला फर्स्ट और ये सेकंड पार्टिकल है. ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज. बोलो बच्चा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ u1t? व्हाट इज u1t? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन. बोलो बच्चा, क्या आंसर है? Initial velocity along tangent direction. Tangent क्या होगा गाइस? आपको परेशानी हो रही है तो tangent will be like this one, like this one. तो मैं क्या कर रहा हूं, tangent को ऐसे पैरेलल यहां दिखा रहा हूं. Perpendicular to the normal. क्या लिखा मैंने बच्चा? Perpendicular to the normal. This is the tangent direction. Perpendicular to the normal. This is the tangent direction. No problem. है ना. तो बोलो बच्चा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? तो v ही था ना, मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम. मान लो इसको u0 बोलता हूं, अभी खुश रहो. ठीक है, तो u0 इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. ओके, तो व्हाट इज u1t? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिफोर कोलिजन इन टेंजेंट डायरेक्शन. तो अलोंग द टेंजेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बच्चा? दिस इज u0, दिस इज अल्फा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा. तो व्हाट इज द आंसर? u0 sin alpha. What is u2t बच्चा लोग? Before collision, the velocity of second particle along tangent. तो ये तो रेस्ट पे ही है भाई. ये क्या है, रेस्ट पे है ना. Second ball is at rest, so ये तो जीरो ही है. Initially, if the body is at rest in any of the direction, it will have zero velocity only. So zero. Now, what about v2t? What about v2t? बोलो बच्चा लोग, v2t क्या होगा? This is before collision. This is before collision. If I draw the condition for after collision, बोलो बच्चा लोग, what will be the answer for v2t? मतलब velocity of this second object along the tangent. बच्चा प्लीज आंसर करो यार, क्या आंसर मिलेगा? जीरो.
मैंने बोला ना along tangent individually their velocity won't change because no force is there. तो initially along tangent what was the velocity? 0. So after collision along tangent what will the velocity? 0 only. So this will not have a velocity in tangent direction, that is for sure, no problem. What about V1t? What about V1t? बोल बच्चा लोग. What about V1t? Velocity of the first particle. Velocity of the first particle after collision along the tangent. It will remain same. V1t will be equal to U1t. That is equal to U0 into sine alpha. So now this is going to have a velocity along this direction. This is going to have a velocity along this direction. वो कितना है बच्चा लोग? This is with U0 sine alpha. No problem. Now let us talk about tangent. Tangential direction को देखते हैं. U1n, what is the formula बच्चा लोग? तो U0 cos alpha. U0 ये tangent है, U0 cos alpha. What is U2n बच्चा? तो that is 0, no problem. What will be the value of V1n? What will be the value of V2n? So along the tangent, that means along the line of impact. If collision is elastic collision and if masses are same, ध्यान से सुनना बच्चा. During elastic collision, if masses are same, what happens to the velocity along line of impact? Head-on collision की बात कर रहा हूं मैं. In head-on collision, a line of impact के along होता है ना velocity. So what happens to the velocities along line of impact during head-on collision if masses are same? क्या होता है बच्चा? Their speeds got exchanged. Their speed will what? Their speed will get exchanged. मतलब U1n हो जाएगा V2n के बराबर. This will become this one and this will become this one. Got it? यही होता है ना बच्चा? So this will be the value of V1n and this will be the value of V2n. ये क्या हुआ? Exchanged. ठीक है बच्चा लोग? Once it happens, मतलब क्या है देखो, velocity of the first particle along normal after collision is 0. मतलब this first ball will have only the tangential component. Velocity of second object after collision along normal will be U0 cos alpha. Tell me guys, aren't they moving in perpendicular direction? देखो, एक जा रहा है नॉर्मल की तरफ, एक जा रहा है इधर की तरफ. Aren't they in perpendicular direction? Guys, click yes if you have understood this. बच्चा इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? बट बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है. Guys, please click yes if you have understood this and let me know if you have any doubt. ठीक है? Please let me know if you have any doubt. मैंने रीजन भी बता दिया. Since elastic collision and m1 is equal to m2, so their velocity will be exchanged. कौन से डायरेक्शन में? Along the line of impact, along the normal. Or using coefficient of restitution also you could have found. Using coefficient of restitution also you could have found. कैसे? तो E is equal to क्या लिखते हैं बच्चा? V2n minus V1n divided by U1n minus U2n लिखते हैं ना अपन. तो देखो बच्चा, ये क्या हो जाता? 0. ठीक है? क्या हो जाता बच्चा लोग? 0. अभी देखो V2n minus V1n, ये भी क्या है बच्चा लोग? 0. Sorry, that is not 0. Yeah, this one is what? V2n. मुझे V2n निकालना है ना. U1n मालूम मेरे को. U1n क्या है? V1n क्या है बच्चा लोग? What is V1n? नहीं मालूम. What is U1n? नहीं, या ये पता है मेरे को. This is the direction. करेक्ट है ना? ये मेरे को मालूम है.
ये मेरे को पहले का मालूम है, बाद का क्या होगा बच्चा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। आप यूज करके देखो, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। चलो एनीवे, आपको मैंने ऑलरेडी उस सब चीजें करके दिखाया हुआ है। चलो तो ये पार्ट मुझे मिल गया, it'll get exchanged. This is the answer for this question. So now, why did I include this question here? आप ये बताओ, why did I include this question here? You don't have to remember the full derivation here. ये तो derivation आपने पढ़ लिया, समझ लिया. Now you have to remember this question only. You have to remember this question only. मतलब ये जो statement है, that statement is important for you. If in a case this statement, this condition is given to you directly, तो आपको क्या ये सारी चीजें फिर से करना है? नहीं. After collision, simply draw this diagram. After collision, simply draw this diagram based on this fact. तो आपका टाइम बचेगा. Other kids will be spending time in solving them and other things. You will be just solving this in 30 seconds and then going to the next question. चलिए, next question बच्चा लोग. Same question. We have done this type of question earlier. I request all of you to please attempt this and get the correct answer for this. इसका आप करेक्ट आंसर बताओ. मैंने इसका एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया इसके पहले. The main motto of including this question again is you should know what to do, because देखो, in all the books, in all the coaching institute material and all, head-on collision will be given more priority. In the question bank also, they will give question from head-on collision only. That is important also. And at the end, they will give you thoda sa way, thoda sa tarika. So what we have now, क्योंकि out of, let's say if you're spending 100 minutes of time to study collision, for 80 minutes of time you will be taught head-on collision, and for the next 20 minutes you'll be taught oblique collision. तो होता क्या, our mind got so saturated with head-on collision that हम वो जो process है ना, the approach, the procedure that we follow for oblique collision will get faded away. तो होता है कि एक क्वेश्चन बनाया, समझ में आया, after a day if I ask you that question ना, तुम्हें याद नहीं रहेगा, because you have not prioritized that, you have not given proper importance to that topic. इसलिए मैंने क्या किया, देखो एक क्वेश्चन कराया, फिर थोड़ा सा तुम्हारा लीक को हटाया. I tried to give a different question. Again, I have repeated the same question, so that now if you're going to solve this and if you're going to recall the concept, this will become a pakka memory for you. So I request all of you to please attempt this question honestly and recall the concepts, recall the approaches that have been shared with you for this type of question. Please attempt karo, take your time and give the answer for this. A ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle of incidence theta with the normal. The coefficient of restitution is E. Find the speed of the reflected ball and the angle of reflection. चलो बच्चा लोग जल्दी से सॉल्व करो. You don't have to give the direct answer only, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अल्फा को थीटा से रिप्लेस किया है, आंसर सेम आएगा. But approach is important for you, so please solve it again with the same approach I have followed. And let me know in the chat box if you are done with it. अच्छा, how many of you remember the answer for this question? Previous question, उसके पहले वाले का आंसर कितने लोगों को पता है, याद है? That will check your memorizing power, recalling capability. हाँ, angle of reflection तो तुम्हें याद है राहुल, that is correct. Angle of reflection you got it correctly. What about the velocity बच्चा? What about the velocity? Approach याद है? Then that is very good, no problem. तब तो कभी भी solve कर सकते हैं. अच्छा बच्चा, एक चीज जो मैंने पढ़ा है उसी से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ. कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है. मान लो बच्चा एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, एक बॉल को आपने इधर कोलाइड करने के लिए भेजा, इसका वेलोसिटी मान लो u है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन u दिया है. बताओ आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी? बोलो बच्चा लोग, आफ्टर कोलिजन इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा?
So if a ball is going to collide with a fixed wall, with a fixed heavy mass, ठीक है, then the ball is going to rebounds. The ball is going to rebounds with the velocity e into u. क्या होगा बच्चा? E into u. If it will be an elastic collision, E will become 1, so it will rebounds with the same speed that we have done. है ना? तो ये क्या है बच्चा? Before collision. ये वेलोसिटी क्या है बच्चा? आफ्टर कोलिजन. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. यही चीज तो मैंने किया है ना यहां पे भी. तो देखो बच्चा, यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे कि Vn का वैल्यू बताओ, तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा? तो नॉर्मल डायरेक्शन में इट विल रीबाउंस बैक विद द स्पीड e इनटू द वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल क्या था बच्चा? तो पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा था. ये वॉल है, ये बॉल है, और ये कुछ ये वेलोसिटी है, ये नॉर्मल है. This angle is given to you at theta. So this is what? Un, and this is what? Ut. So Vn will be equal to E into Un. And what is En बच्चा? Un बच्चा लोग, तो ये Un क्या होगा? ये this is the value V, this is theta. तो क्या मिल जाएगा इधर? E into V cos theta. What will be the value of Vt बच्चा? तो Vt will be equal to Ut. What is Ut? So this is V, this is theta, so this will be 90 minus theta. तो क्या मिल जाएगा? V sin theta. So what will be the value of V? Square root of Vt square plus Vn square. Answer will be V into square root of E square cos square theta plus sin square theta. Clear है बच्चा लोग? What about the direction? So tan beta will be equal to tan theta divided by E. यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चा? थीटा. तो tan theta by E. If it will be an elastic collision, if it will be an elastic collision, तो E क्या हो जाएगा बच्चा? 1. tan beta will be equal to tan theta. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जिस एंगल से इंसिडेंट किया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा. कब? जब इलास्टिक कोलिजन होगा तब. ठीक है? सो इफ इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, व्हाट विल हैपन? द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अदरवाइज इन inelastic collision, what will happen? It will be tan theta by E will be the tan beta value, where beta is the angle of reflection. And what is angle of reflection? Angle made by the reflected light or reflected ray or reflected propagated direction with the normal. तो ये propagation का ये था ना line, इसके साथ normal क्या? तो ये beta है. Guys, did you understand these two questions? Click yes if you have understood the concept. बच्चा लोग, सबको concept समझ में आया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे. करना क्या है? टेंजेंट डायरेक्शन में ब्रेक करो, नॉर्मल डायरेक्शन में ब्रेक करो, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करो, काम हो जाएगा. सब जगह यूज होता बच्चा वो. चलो बच्चा लोग, इसका आंसर कर दो जरा से. टिल सेकंड एग्जांपल यू कैन सॉल्व. गिव द आंसर फॉर दिस. यहां तो कुछ सॉल्यूशन भी दे दिया है, but still you can solve it. Come on guys, give the answer for velocity of the sphere after impact and loss in kinetic energy caused by impact. थर्ड का मैं बताता हूं थ्योरी बताने के बाद. अच्छा, नेक्स्ट वीक क्या होगा बच्चा? नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास क्या होगा? तो आई थिंक टुडे आई वोंट बी एबल टू टीच यू द इम्पैक्ट एंड वेरिएबल मास वाला. तो लास्ट like next Monday I'm going to teach you the concept of impulse and we'll have a doubt solving session on collision and momentum. ठीक है? From Tuesday we are going to start कौन सा चैप्टर बच्चा? रोटेशनल डायनेमिक्स. एकदम मस्त खूबसूरत चैप्टर. In rotational dynamics, almost all the kinematics, all the dynamics that you have studied will come in a way or other. कभी फोर्स का आपको मालूम चलेगा. Sometimes you will be using the kinematics of circular motion. Sometimes you'll be using the kinematics of linear motion. Sometimes you'll be using the concept of friction. ठीक है? तो rotational dynamics is very very important and it will help you to recall like previous chapters also.
ठीक है, बिकॉज एप्लीकेशन इज देयर। चलो बच्चा लोग इसका आंसर करो, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास। You can answer this and then the class will be officially over. First answer this. So Rahul Girisagar has answered, but I doubt it. X axis किधर है बच्चा, ध्यान से देखो। वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है बच्चा, x एक्सिस। क्योंकि लिखा है देखो, वर्टिकल वॉल विच इज पैरेलल टू जे कैप, वर्टिकल वॉल विच इज पैरेलल टू जे कैप, मतलब ये है आपका जे कैप और ये है आपका आई कैप। अरे बताया तो अक्षय, सी अभी तुझे पढ़ाया नहीं तो क्या सी लिख रहा है तू, मिर्ची लगी है क्या तुझे, या तुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है, भांग खा के बैठा है क्या? Come on guys, give the answer for first one. Velocity of the sphere after impact. Actually, it has been given to you already in the figure. If you are looking at the diagram, it has been given to you. You have to simply write it. Vector form में लिखो बच्चा। ए अक्षय गौड़ा, छोड़ दे रे, मीटिंग छोड़ दे, तुझे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। You'll never understand physics. Akshay Gowda, leave the meeting day. What is this A and C? पागल हो गया क्या? Vineet is saying -3/2 I cap plus J cap. That is correct. Clear है यार, simple देखो दिया हुआ है. This is the ball before collision. This is the ball after collision. Along the tangent, if I'm giving you the velocity is having 3 I cap plus J cap. That means along x-axis the velocity is 3, along y-axis velocity is 1. Got it? This is the tangential direction. This is the normal direction. Along the tangent after the collision, the velocity won't change. So along the tangent, initially velocity was 1. So after collision also the velocity will be 1. Along x-axis, which is the normal direction, velocity was 3 meters per second normally. After collision, the velocity will be e into 3 in opposite direction. Rebounds it in opposite direction with the speed e into u. U was what? 3. So 3 into e. तो आंसर e का वैल्यू कितना दिया बच्चा? हाफ. तो half into 3 is 3/2. So it will bounce back with the speed of 3/2, which is कौन सा डायरेक्शन में? Towards negative x-axis. So what is the velocity after impact बच्चा लोग? So velocity after impact is nothing but -3/2 I cap plus -3/2 I cap plus 1 J cap. This is the answer. If you need to find the speed, you can say speed will be equal to square root of 3/2 square plus 1 square. तो क्या मिल जाएगा बच्चा लोग? 9 plus 4 divided by 4. ये आंसर मिलेगा स्पीड का. अच्छा, what about loss in kinetic energy caused by the impact? What is the loss in kinetic energy caused by the impact? So find the initial kinetic energy, find the final kinetic energy. Take the difference, that will be the answer. Yes, Vineet, in the figure, in the diagram, they have already given 3/2. यही तो होता है ना. This is the difference that you guys are going to create amongst yourself. कि तुम questions को पढ़ते हो ठीक से कि नहीं, और just look at the question and just try to run. ये देखो clear दिया हुआ है, ये इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी. All right guys, thank you for attending the class. Stay safe, stay healthy and have a nice day. Bye bye, take care. And Akshay Gowda, please come with fresh mind and sincerity, okay? Don't come with like soya hua sa sleepy head. Thank you bachcha log, thank you so much for attending the class. Stay safe, stay healthy and have a nice day. Bye bye, take care. If you have any doubt, you can stay here, ask the doubt. Otherwise, you are free to leave. Thank you. This is, yeah, for today, the class is officially over. Bye-bye.